Hello everyone. Join fast to the live of the 50 MCQ series of the chapter number 4, that is of effects of electric current, class 10th. Hello. We will start in next 2 minutes. So let's get started. Uh, so the first question, that is of the chapter 4, effects of electric current, is in front of you. That is question number 1 is the heating effect of electric current is due to option A is magnetic effect, option B is chemical effect, option C is resistance of conductor, and option D is electric field. So you can answer this question correctly in the live chat. So answer fast that what will be the correct answer of this question. बताइए आप what will be इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा for this the heating effect of electric current is due to option A is magnetic effect, option B is chemical effect, option C is resistance of conductor, and option D is electric field. क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप यहाँ पर लाइव चैट में बता सकते हैं. हेलो हेलो प्रेमराज. जल्दी से आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा. लाइव चैट में आप बताइए. The heating effect of electric current is due to option A magnetic effect, option B is chemical effect, option C is resistance of conductor, and option D is electric field. बताइए आप क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ए, बी या सी या फिर डी. देन वी विल डिस्कस कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Yes, so no one has given here the correct answer of this question. कोई बात नहीं. We will see that what will be the correct answer of this
question. The heating effect of electric current is due to. So the correct answer for this question will be here, that is the resistance of the conductor. As we have studied about the effects of इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर दैट कि जब भी मतलब यहाँ पर रजिस्टर से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर पास करें सो वहाँ पर जो है हीट वहाँ पर जनरेट होती है सो ड्यू टू विच द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी हियर दैट इज ऑप्शन सी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the device that converts electrical energy into the heat energy is. Option A is electric motor, option B is electric heater, option C is generator, and option D is transformer. So, what will be the correct answer of this question? So, answer in the live chat with the correct option. कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट करेगा. सो इलेक्ट्रिक मोटर, हीट इलेक्ट्रिक हीटर, जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर. So the correct answer for this question will be that is electric heater. So electric heater is basically that converts the electrical energy into the heat energy. यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सो उसको वो कन्वर्ट कर देगा हीट एनर्जी में. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है SI unit of the electric current is. Option A volt, option B is ampere, option C is ohm and option D is watt. सो आप जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा. लाइव चैट में आप बता सकते हैं कि ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है. कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर पूछा गया है दैट इज ए वोल्ट, ऑप्शन बी इज एम्पियर, ऑप्शन सी इज ओम एंड ऑप्शन डी इज वैट. सो आप जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब जो कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर पूछा गया है. सो वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर वैट. So the correct answer for this question here, the SI unit of the electric current is, so its SI unit of electric current is ampere, as we have studied about this in this chapter of effects of electric current. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज ऑफ एम्पियर. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज fuse works on which effect of electric current? So option A magnetic, option B is chemical, option C is heating and option D is mechanical. Fuse works on which effect of electric current? Magnetic, chemical, heating and mechanical. So answer fast of this question.
So fuse works on which effect of the electric current? मैग्नेटिक, केमिकल, हीटिंग या फिर मैकेनिकल? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, फ्यूज वर्क्स ऑन विच इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हीटिंग. सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे जो फ्यूज होता है, फ्यूज बेसिकली वर्क्स ऑन दैट प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ. So option A is copper, option B is aluminum, option C is tungsten, and option D is iron. So you can answer this question. What will be the correct option of this uh, particular question? So आप यहाँ पर लाइव चैट में बता सकते हैं कि क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का. कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब की जो फिलामेंट होती है, सो वो किससे बनी होती है? कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या फिर आयरन? यस. सो यहाँ पर जो चंदन कुशवाहा जी ने यहाँ पर आंसर दिया है ऑप्शन सी. यस. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑफ द टंगस्टन. यस. सो इट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, टंगस्टन. सो बहुत बार मतलब एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अगर बल्ब की अगर बात में यहाँ पर करूँ, सो सपोज दिस इज द बल्ब एंड सो अगर ये यहाँ पर बल्ब है, so and this is the filament which is of the bulb, so it is made up of that tungsten. and इस टंगस्टन के जो एलिमेंट जो होता है, सो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से यहाँ पर उसे फिलामेंट करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है. एंड इट हैज द मेल्टिंग पॉइंट, सो मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ द 3422 डिग्री सेल्सियस. 3422 डिग्री सेल्सियस. So this is the melting point of that tungsten filament. Yes, so moving forward with the next question, that is, which effect of the electric current is used in an electric motor? So option A is A heating, option B is chemical, option C is magnetic, and option D is luminous. So what will be the correct answer of this question? You can answer in the live chat. So which effect of electric current is used in the electric motor? Yes, so correct answer is given here. That is option C. Yes, so option C, that is magnetic, is the correct answer. So magnetic effects of the electric currents are there, on which principle, that is the working of the electric motor works. So let's move forward with the next question. SI unit of the electric power is, option A is joule, option B volt, option C is watt, and option D is ampere. Yes, so again the correct answer is there. That is option C given, which is watt. So the SI unit of the electric power, so it will be, that is option C, watt. So let's move forward with next question. So electric iron works on which principle? Option A magnetic effect,
option B is heating effect, option C is chemical effect, and option D is none. So the working of the electric ion is on which principle? यस सो ऑप्शन बी किसी ने बताया है, किसी ने ऑप्शन ए यहाँ पर बताया है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर विल बी दैट इज ऑप्शन बी, बिकॉज इलेक्ट्रिक आयन जो होती है दैट इज बेसिकली वर्किंग ऑन द कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी. सो यस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज हीटिंग इफेक्ट. So let's move forward with the next question. That is, the resistance of a conductor depends on option A is length, option B is area of cross section, option C is material, and option D is all of these. So यहाँ पर अलग अलग आंसर दिए गए हैं. दैट इज कोई ऑप्शन बी कह रहा है, कोई ऑप्शन डी कह रहा है. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस. सो अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर स्टडी किया था, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इनटू एल बाय ए. सो दैट इज आर, that is resistance depends on, that is resistivity also, length also, area of cross section also, and also that kind of the material which is used for uh, making of that resistor. So correct answer for this question will be that is option number D. Yes. सो तो चलिए बढ़ते आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विच मटेरियल इज यूज्ड एज अ फ्यूज वायर? सो फ्यूज वायर में कौन सा मटेरियल यहाँ पर यूज किया जाता है? सो ऑप्शन आपके सामने, दैट इज ऑप्शन इज कॉपर, ऑप्शन बी इज आयरन, ऑप्शन सी इज एल्यूमिनियम, एंड डी इज टिन लेड एलॉय. यस, सो यहाँ पर जो है आंसर दिया गया है, करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी, टिन लीड एलॉय. यस, सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नहीं, सी नहीं आएगा. एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम विल नॉट बी यूज्ड इन द फ्यूज वायर. फ्यूज वायर जो होती है, सो बेसिकली फ्यूज वायर जो है हम यूज करते हैं फॉर द appliances to get from prevent them from the short circuits. So due to which the fuse wire is made up of the tin lead alloy, not from with the aluminum, copper or iron. So let's move forward with next question. The bulb glows due to option A chemical effect, option B is heating effect, option C is magnetic effect, and option D is sound effect. Yes, तो आप बता सकते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? यस, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया है लाइव चैट में. बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज द हीटिंग इफेक्ट. Yes, so correct answer, that is the bulb glows due to the option B, that is heating effect. सो द रीजन बिहाइंड दैट द हीटिंग इफेक्ट इज, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर जो देखा कि जो बल्ब की जो फिलामेंट है दैट इट इज मेड अप ऑफ द टंगस्टन मेटल विच इज हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3422 डिग्री सेल्सियस. ड्यू टू विच वो मेल्ट, जब इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास होती है, सो द टंगस्टन मेटल जो होती है, सो वो हीट होती है, एंड ड्यू टू विच इट गेट्स कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी. So the effect which we observed here, that is the heating effect. So option B is the correct answer of this question. So चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. दैट इज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस which effect in a conductor? Option A only heat, option B is only magnetic, option C is only chemical, and option D is multiple effects.
सो आप बता सकते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर लाइव चैट में। सो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस विच इफेक्ट इन अ कंडक्टर? ओनली हीट, ओनली मैग्नेटिक, ओनली केमिकल या फिर मल्टीपल इफेक्ट्स? सो यहाँ पर रविशंकर जी ने यहाँ पर आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन ए। चंदन कुशवाहा जी ने यहाँ पर आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन डी। सो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी द ऑप्शन डी, मल्टीपल इफेक्ट्स। सो बिकॉज क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा कि जब इलेक्ट्रिक करंट जब पास हो रहा है, सो हमने यहाँ पर देखा कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑल्सो, हमने वहाँ पर अलग अलग जो एप्लीकेशन है वो इस चैप्टर जो कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने स्टडी किए थे। सो हम यहाँ पर जो आंसर आएगा, दैट इज मल्टीपल इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस, दैट इज heat also is heating effect is also observed, and also with the magnetic effect is also observed in the when the electric current produces in a conductor. So correct answer for this question will be option D. So let's move forward with the next question. The formula for electric power is option A, P is equals to VI, option B, P is equal to IR, option C is P is equals to V by R, and option D is P is equals to I by R. यस, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, दैट इज ऑप्शन ए। यस, इट इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज पी इज इक्वल्स टू वी आई। सो ये तो बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि मतलब बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत बार फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है। सो आपको जो भी फॉर्मूलेज वगैरह जो हर एक चैप्टर में दिए गए हैं, सो आपको वो ध्यान में रखने हैं। एक फार्मूला से रिलेटेड भी एक सीरीज यहाँ पर आई विल ट्राई टू टेक रिगार्डिंग की सारे जो जितने भी चैप्टर्स के सारे जो फॉर्मूलेज है वो मैं आपको यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो विच इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग? ऑप्शन ए इज हीटिंग, ऑप्शन बी इज मैग्नेटिक, ऑप्शन सी इज केमिकल, एंड डी इज मैकेनिकल। सो बताइए आप, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो यहाँ पर चंदन कुशवाहा जी ने यहाँ पर आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन डी। अगेन एनीवन? सो रविशंकर जी ने यहाँ पर आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन थ्री। यस। सो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो कि है, विच इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑब्जर्व्ड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम करते हैं, सो यहाँ पर जो होता है, जो इफेक्ट ऑफ करंट होता है, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज केमिकल इफेक्ट। एज वी हैव सीन दैट वी आर डिपॉजिटिंग द silver on we are doing the plating of that silver on that metal element, so due to which the effect of current which is observed is that is of the chemical effect. So the correct answer will be option C. So let's move forward. I hope your doubts are clear regarding that option D यहाँ पर नहीं होगा, मैकेनिकल इफेक्ट नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर जो होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, केमिकल। आई होप आपका जो डाउट है रिगार्डिंग विद द ऑप्शन डी कि मैकेनिकल क्यों नहीं होगा, दैट इज क्लियर। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, ऑप्शन ए इज वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, सी इज ओम, एंड डी इज वैट। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यस, तो यहाँ पर जो आंसर यहाँ पर दिया गया है, रविशंकर जी ने दिया है, आर्य वर्मा जी ने यहाँ पर आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन सी। यस, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओहम। So ohm is basically this is the symbolic representation of this resistance. Yes, option C is the correct answer.
सो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डिवाइस यूजेस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? सो हीटर, इलेक्ट्रिक बेल, फ्यूज या फिर बल्ब? सो जल्दी से आप बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यस, सो यहाँ पर जो है सी यहाँ पर आंसर बताया गया है। किसी ने कोई ए कह रहा है, कोई सी। एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। विच डिवाइस यूजेस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? हीटर, इलेक्ट्रिक बेल, फ्यूज या फिर बल्ब? यस, तो यहाँ पर जो आंसर बताया जा रहा है सी, लेकिन यहाँ पर जो है सी आंसर यहाँ पर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी हियर, दैट इज बी, विच इज द इलेक्ट्रिक बेल। जो कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल के बारे में जो स्टडी किया था, दैट इज इन द क्लास 9। यस, रविशंकर हैज गिवन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन बी। सो इलेक्ट्रिक बेल जो होती है, दैट इज बेसिकली वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके बारे में हमने क्लास 9th में वहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल से रिलेटेड डिटेल में वहाँ पर स्टडी की थी। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो सो लॉन्गर वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस या फिर डी, जीरो रेजिस्टेंस? ओके, सो आप जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Longer wire has ऑप्शन ए इज लेस रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इज मोर रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस या फिर जीरो रेजिस्टेंस? यस, तो यहाँ पर ऑप्शन ए रविशंकर जी ने यहाँ पर बताया है। सो लॉन्गर वायर जो होती है उसमें लेस रेजिस्टेंस होता है, मोर रेजिस्टेंस होता है, नो रेजिस्टेंस या फिर जीरो रेजिस्टेंस? सो जो भी हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला देखा था, सो कि दैट इज रेजिस्टेंस जो है, दैट इज आर, मिनट, दैट इज R is directly proportional to rho into L upon A. So अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ फॉर्मूले से, सो व्हाट विल बी दैट कि रेजिस्टेंस जो है, सो रेजिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यानी अगर मेरी लेंथ ऑफ द वायर अगर बढ़ती जाती है, सो रेजिस्टेंस भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज मोर रेजिस्टेंस। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। दैट इज ऑप्शन ए विल नॉट बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी हियर। So because resistance जो है that is directly proportional to the length of the wire. As the length of the wire increases, the uh, resistance will also go on increasing. So correct answer for this question will be option B. Okay, अगर गलत भी हो गया so no problem. So try to answer. Okay, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The strength of electromagnet depends on, option is current, option B is number of turns, option C is core material, and option D is all of these.
यस, सो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आर्य वर्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं दैट इज ऑप्शन ए। रविशंकर साहू जी यहाँ पर कह रहे हैं दैट इज ऑप्शन डी। यस, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है जो दिया है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ हमने यहाँ पर बात की थी, सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि उसमें से करंट कितना पास हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, और मटेरियल कौन सा यूज किया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दैट इज ऑप्शन डी। So strength of the electromagnet depends on, that is all of this is the correct answer. So चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज विच इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस। ऑप्शन ए इज हीटिंग, ऑप्शन बी इज मैग्नेटिक, ऑप्शन सी इज केमिकल एंड ऑप्शन डी इज मैकेनिकल। सो कौन सा ऐसा इफेक्ट है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, हीटिंग, मैग्नेटिक, केमिकल या फिर मैकेनिकल। सो आप जल्दी से बता सकते हैं व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आर्य वर्मा जी ने यहाँ पर आंसर ए दिया है, और रविशंकर जी यहाँ पर आंसर डी कह रहे हैं। सो एनीवन एल्स who is giving the answer of this question? 1 minute or this. Yes. सो द करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी द, सो इट विल कम्स आउट टू बी द केमिकल इफेक्ट। बिकॉज अगर हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं दैट इज कि इलेक्ट्रोलिसिस, 1 मिनट, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिसिस की हम बात कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रोलिसिस इज बेसिकली जब हम करंट वहां से पास करेंगे, सो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द आयंस और द गैस डिपॉजिट्स एट द इलेक्ट्रोड्स, दैट इज द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन gas which we called is as the electrolysis of the water. So basically a chemical reaction that takes place, which we called is that as the ionization reaction. So basically जो यहाँ पर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, so that is the chemical effect. So the answer of this correct question will be that is option C. So चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रिक केटल वर्क्स ऑन केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर साउंड इफेक्ट। सो आप जल्दी से बता सकते हैं व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। केमिकल इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर साउंड इफेक्ट। सो आप जल्दी से बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यस, तो रविशंकर जी ने यहाँ पर आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन टू। यस, दैट इज हीटिंग इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर कि इलेक्ट्रिक केटल जो, यस आर्य वर्मा जी ने यहाँ पर ऑप्शन बी दैट इज करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया है, दैट इज ऑप्शन बी हीटिंग इफेक्ट। यस, सो इलेक्ट्रिक केटल जो होती है वो वर्क करती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मटेरियल विथ हाई रेजिस्टेंस इज, ऑप्शन इज कॉपर, ऑप्शन बी इज एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी इज निक्रोम एंड ऑप्शन डी इज सिल्वर। ये ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि हाई रेजिस्टेंस के यहाँ ऊपर काम करता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, निक्रो या फिर सिल्वर। सो जल्दी से आप बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यस, तो यहाँ पर आर्य वर्मा और रविशंकर जी ने दोनों ने यहाँ पर ऑप्शन थ्री, ऑप्शन सी यहाँ पर कहा गया है दैट इज निक्रोम। यस, सो इट इज द करेक्ट आंसर। सो
correct answer of this question, that is nichrome. So nichrome wire is basically having the highest resistance. Yes. So चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which rule is used to find direction of magnetic field? Option A is Ohm's law. Option B is right hand thumb rule. Option C is Fleming's left hand rule. And option D is Newton's law. So which rule is used to find the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ओहम्स लॉ, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर न्यूटन्स लॉ? सो जल्दी से आप बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यस, सो रविशंकर जी यहाँ पर बी कह रहे, आर्य वर्मा जी यहाँ पर कह रहे दैट इज सी. सो बी यहाँ पर बताया जा रहा है दैट इज राइट हैंड थंब रूल. यस, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि अगर यहाँ पर हमने मतलब ये जो चैप्टर हमने यहाँ पर स्टडी किया, सो उसमें हमने देखा था कि सपोज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ आई एम होल्डिंग इट इन माय राइट हैंड, सो राइट हैंड का जो थंब है दैट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ कंडक्टर, एंड द कर्ल्ड फिंगर्स आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर लाइव चैट में दिया गया है, दैट इज ऑप्शन बी, विच इज द राइट हैंड थंब रूल. यस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन. यस, सो आई होप मतलब ये क्वेश्चन शायद हो गया हमारा पहले भी एक बार. इलेक्ट्रिक केटल हो गया. नो, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है. सो इलेक्ट्रिक बेल जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर यहाँ पर वर्क कर दिए? यस, सो इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन. ऑप्शन है आपके सामने, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट. सो जल्दी से आप बता सकते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? सो आर्य वर्मा जी ने यहाँ पर ए आंसर दिया है. सो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है कि इस क्वेश्चन का दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग की बात यहाँ पर की गई है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. और जो पिछला हमने क्वेश्चन देखा था दैट इज ऑफ द इलेक्ट्रिक केटल. सो इलेक्ट्रिक केटल में यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट था, और जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल पूछा गया है, सो इट विल ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट. आई होप आपका जो डाउट है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा दोनों क्वेश्चन का. सो चलिए बढ़ते. यस, ऑप्शन सी. यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट. यस. चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच इफेक्ट कॉजेस डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल? यानी कौन सा ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से जो नीडल का जो कंपास होता है उसमें डिफ्लेक्शन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऑप्शन ए इज हीटिंग, ऑप्शन बी इज केमिकल, ऑप्शन सी इज मैग्नेटिक एंड ऑप्शन डी इज ल्यूमिनस. सो जल्दी से आप बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यस, इलेक्ट्रिक केटल और इलेक्ट्रिक बेल, जो भी मतलब कॉमन तो इलेक्ट्रिक है, लेकिन जो अप्लाई होने के बाद जो वहां पर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है. 1 मिनट, मैं आपका यहाँ पर डाउट जो है वो क्लियर करना चाहूंगा.
कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बेल का जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सो इसकी वजह से यहाँ पर कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। सो जिसका इफेक्ट जो प्रोड्यूस हम यहाँ वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, सो बेसिकली उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। सो सपोज इलेक्ट्रिक बेल में क्या हो रहा है कि सपोज जो बेल यहाँ पर अटैच होती है, सपोज दिस इज द 1 मिनट। सपोज ये जो बेल यहाँ पर अटैच्ड है, दैट इज, और यहाँ पर जो स्ट्रिंग यहाँ पर अटैच होती है, आई विल टेल दैट कि बेल पे जब हम वहां से जब इलेक्ट्रिसिटी वहां पर पास करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब वहां से पास होता है, सो इट प्रोड्यूसेस द सोनोरस साउंड, जिसकी वजह से वहां पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से जो है वो मेटल बॉब जो है वो एक सरफेस पर बीट होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पर ऑब्जर्व होता है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक बेल जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। यस। ओके ओके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, यस, विच इफेक्ट कॉजेज डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल। सो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बता सकते हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इफेक्ट कॉजेज डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल। सो जल्दी से आप बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि कंपास नीडल के इसमें डिफ्लेक्शन कौन से इफेक्ट को की वजह से हम वहां पर ऑब्जर्व करते देखते हैं। यस, सो आंसर फास्ट। यस, तो आंसर यहाँ पर दिया था, दैट इज ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस यस, ऑप्शन सी इज मैग्नेटिक इफेक्ट, बिकॉज हमने वहां पर एक एक्सपेरिमेंट भी इससे रिलेटेड इस चैप्टर में देखा था। सो हमने क्या किया था, एक कार्डबोर्ड पे आयन आयन फिलिंग्स वी हैव टेकन, और उसे हमने वहां पर रैंडमली प्लेस किया था, और जब वहां से इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है, सो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पर जो है दैट आयन फिलिंग्स गेट ऑकर्ड इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ, ऑप्शन ए इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन बी डिक्रीज इन लेंथ, ऑप्शन सी इंक्रीज इन एरिया, एंड ऑप्शन डी इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये सो आप जल्दी से बता सकते हैं व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, आप यहाँ पर बता सकते हैं लाइव चैट में। Resistance increases with increase in temperature, decrease in length, increase in area, decrease in temperature. ये सो यहाँ पर जो है आंसर दिए है, दैट इज ऑप्शन डी। सो ये सो लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन ए, विच इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो क्योंकि व्हाट व्हाई विल बी द हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं, सो जो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि रेस्ट में होंगे, दैट दे विल गेट एक्साइट, और जिसकी वजह से वहां पर जो है जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। दे विल रजिस्ट टू पास द करंट थ्रू दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। सो इसीलिए रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम यहाँ पर बढ़ाते जाए, सो उसका रेजिस्टेंस भी वहां पर बढ़ते जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि आंसर ए यहाँ पर करेक्ट क्यों है। सो द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कौन सा ऐसा मेटल है दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम या फिर आयरन। यस, तो रविशंकर जी ने यहाँ पर आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन बी। यस, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दैट इज सिल्वर। सो बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज द सिल्वर। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो विच इफेक्ट ऑफ करंट yes so yes, silver is the correct answer. So which effect of current causes plating of metals? So option A is heating, option B is chemical, option C is magnetic and option D is mechanical. So जल्दी से आप बता सकते हैं what will be the correct answer of this question। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया। So which effect of current causes plating of metals? Option A is heating, option B is chemical, option C is magnetic and D is mechanical. सो जल्दी से आप बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर लाइव चैट में। यस, सो ऑप्शन डी यहाँ पर आर्य वर्मा जिन्हें यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी कहा गया है। एनीवन एल्स? और किसी को यहाँ पर आंसर देना है सो आप यहाँ पर लाइव चैट में बता सकते हैं। यस, ऑप्शन सी। कोई कह रहा है ऑप्शन डी, कोई ऑप्शन सी कह रहा है। सो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। क्योंकि सी और डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉजेस प्लेटिंग ऑफ द मेटल्स, यानी कि जो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात की थी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द मेटल्स, जो जहाँ पर हम सिल्वर वहां पर डिपॉजिट कर रहे थे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही मैंने जो कंटेंट था वो आपको मतलब यहाँ पर बताया था दैट इज। सो ये भी हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो यहाँ पर जो इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा था दैट इज ऑफ द केमिकल इफेक्ट। सो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज करेक्ट आंसर इज द केमिकल इफेक्ट विच इज ऑब्जर्व। That is the current when passes of plating of the metals is observed, that is of the chemical effect of the electric current. So let's move forward with the next question. So the filament of bulb has yes, so the filament of bulb has high resistance, conductivity, density या फिर elasticity। yes, so यहाँ पर जो है आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन ए। सो यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दैट इज ऑफ द resistance. So the filament of the bulb has the highest resistance. So next question, which instrument measures electric current? Option is voltmeter, option B is ammeter, option C is galvanometer and option D is ohm meter. यस, तो यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, यहाँ पर एमीटर। यस, तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का दैट इज एमीटर विच इज ऑप्शन बी। सो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है दैट इज ऑफ द एमीटर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस वायर मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम या फिर सिल्वर। यस, सो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन सी। यस, सो ऑप्शन सी दैट इज निक्रोम इज द करेक्ट आंसर।
electric heater uses wire made up of the that is option C, nichrome. So nichrome is the basically it is the combination of the nickel plus chromium. So many of the times such type of the question is also asked कि nichrome जो है वो दो अलग अलग जो metals है जिसका combination that is nickel and the chromium. So next question. Magnetic field is produced when option A current flows through conductor, option B wire is heated, option C battery is connected, and option D switch is off. यस सो यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन ए. यस सो ऑप्शन ए दैट इज करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर इज द करेक्ट आंसर. सो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which effect of current is harmful? Option A heating, option B is magnetic, option C is chemical, and option D is sound. सो जल्दी से आप बता सकते हैं. यस तो सी, किसी ने सी कहा है, किसी ने डी, किसी ने ए. So the correct answer for this question here will be that is option A, heating effect. So heating effect of the current is that which is sometimes it comes out to be the harmful. So let's move forward. Electric fuse is connected in option A is parallel, option B is series, option C is both, and option D is none. सो बेसिकली जो केमिकल इफेक्ट जो है वो आंसर क्यों नहीं है. बिकॉज जो भी केमिकल इफेक्ट्स हमने यहाँ पर देखे इफेक्ट्स ड्यू टू द करंट, यानी कि जब हम करंट वहां पर पास कर रहे थे सो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखा, इलेक्ट्रोलिसिस देखा. सो that are all coming that effects of the current to be in the chemical effects. So उसकी वजह से कोई भी मतलब वहां पर harmfulness वहां पर ऑब्जर्व नहीं होती है. So due to which magnetic heating effect क्यों आया, because sometimes the heat is generated in the large amount, so due to which it can cause the circuit to be break down, या फिर वहां पर जो एक्सीडेंट्स वगैरह है, शॉर्ट सर्किट्स वगैरह, so that can also be observed. लेकिन वैसा केमिकल इफेक्ट्स में यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह स्टडी किए, सो उसमें जो भी इफेक्ट्स ऑफ करंट से जो प्रोड्यूस हुए सो दैट आर नॉट टू मच हार्मफुल एज कंपेयर्ड विद द हीटिंग. एंड सिमिलरली दैट काइंड ऑफ विद द मैग्नेटिक एंड ऑल्सो विद द साउंड इफेक्ट्स. सो यस द करेक्ट आंसर इज गिवन दैट इज series. Yes, so electric fuse is connected in the series. So to avoid the breakdown of the current, because if the large amount of the current flows through the circuit, so electric fuse gets breaks or melts to avoid the further damage to the appliances. Yes, so बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The formula of heat produced is, that is option A, H is equal to I square RT, H is equal to VIT, option C, H is equal to IRT, and option D, H is equals to RT.
सो जल्दी से आप बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो है अभी 34 है शायद. सो यस, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गिवन. यस, सो the formula for the heat produced here it will be H is equal to I square RT. So next question, which device converts electrical energy to the mechanical energy? Option A generator, electric motor, battery या फिर transformer. So बताइए what will be the correct answer of this question. Which device converts the electrical energy to the mechanical energy? That is generator, इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी या फिर ट्रांसफार्मर. सो ऑप्शन सी यहाँ पर कहा गया है. सो द करेक्ट आंसर विल बी हियर दैट इज ऑप्शन बी विच इज इलेक्ट्रिक मोटर. सो बेसिकली हमने दो प्रिंसिपल्स स्टडी किए थे, दैट इज ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर. सो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है डिवाइस, सो दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर. और जो वाइस वर्सा है दैट इज फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर. सो इसका कुछ करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक मोटर. Next, moving forward with the next question, which effect is used in the electric bell? So answer fast this question, that which effect is observed in the electric bell? Heating, magnetic, chemical या फिर none? यस, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया है आपने, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन द इलेक्ट्रिक बेल. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर हीटिंग कॉइल? कॉपर, आयरन, निक्रोम या फिर एल्यूमिनियम? Yes, correct answer is given. That is option C. That is nichrome, which is used for in the coil for the purpose of heating. So current through a wire produces heat, magnetism, chemical change या फिर option D all. Current through a wire produces. So this is the question number 38. यस, ऑप्शन डी दैट इज ऑल इज द करेक्ट आंसर. बिकॉज जब भी करंट पास होता है एक वायर में से, सो हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि हमने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा. देन मैग्नेटिज्म देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड ऑल्सो केमिकल चेंज विच वी हैव सीन इन द applications that is of the electroplating, electrolysis and many more. So the correct answer for this question will be here option B. Next question. The SI unit of resistance is named after option A ampere, option B volt, option C is ohm, option D is watt. So जल्दी से आप बता सकते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर लाइव चैट में. ये जो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है वो किसके नाम के बाद यहाँ पर दिया गया है, दैट इज एम्पियर, वोल्ट, ओहम या फिर वैट.
ये सो यहाँ पर आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, ओहम। बिकॉज यहाँ पर जो बात की जा रही है दैट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज द एसआई यूनिट दैट इज ऑफ द ओहम। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। एम्पियर जो है दैट इज ऑफ द करंट। वोल्ट जो है, जो कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस के डिफरेंस की जब हम बात करते हैं दैट इज देन वी आर डीलिंग विद द वोल्ट। वैट जो है दैट इज डीलिंग विद द यूनिट ऑफ द पावर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, ओहम। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन बैटरी चार्जिंग? ऑप्शन ए हीटिंग, ऑप्शन बी इज केमिकल, ऑप्शन सी मैग्नेटिक एंड ऑप्शन डी इज ल्यूमिनस। सो जल्दी से आप बता सकते हैं व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So which effect of the current is used in battery charging? Heating, chemical, magnetic या फिर luminous? So the correct answer for this question here will be that is chemical, option B. So let's move forward. The next question. Electric shock occurs due to, that is heat, current, voltage, and option D is resistance. So you can answer in the live chat with the correct answer of this question. Electric shock occurs due to heat, current, voltage, and resistance. So the correct answer that is electric shock occurs due to here will be that is current. So if the current increases in a circuit, so that leads to the electric shocks. So let's move forward with the next question, that is question number 42. So which effect is so this question we have solved already. So used in the electric belt that is of the magnetic. Next is the resistance decreases with. So increase in temperature, decrease in temperature, increase in length and decrease in the area. So now resistance decreases with what will be that increase in temperature, increase in length या फिर decrease in the area. Yes, so correct answer is given that is option B, that is decrease in the temperature. Hmm.
So let's move forward with next question. Which effect is used in electrolysis of the water? Heating, magnetic, chemical, mechanical. So I hope these questions are repeated here, but let it be. We'll continue. That is effect used in the electrolysis of the water. So which effect is observed that is in the electrolysis of water? So the correct answer for this question will be here. That is option C, chemical. No, it will be the option C, not the mechanical effect. ये क्वेश्चन हमने पहले भी यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस किया दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर is basically that is separation of the hydrogen and the oxygen gases on the and they get deposited on the electrodes. So it is basically a kind of the chemical change which is observed. Chemical reaction takes place in that particular scenario that it is we call as the ionization reaction. So the correct answer for this question will be here, that is option C, which is chemical, not the option D. Yes, so let's move forward with the next question. Which material has the highest resistance? This we have seen. So it is that is nichrome, option C. So, but the next question here, the phenomena of converting electrical energy to heat is called magnetic effect, heating effect, chemical effect या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं लाइव चैट में. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Phenomena of converting electrical energy to the heat is called. सो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं. Yes, so correct answer for this question will be that is phenomena of converting electrical energy to the heat is called that is heating effect. Yes, so let's move forward with the next question. Which effect is used in electromagnet? Option A heating, magnetic, chemical and sound. So the correct answer for this question will be here that is magnetic. So the effect which is observed in the electromagnet that is of the magnetic effect. So let's move forward with the next question. Electric motor is based on heating effect, chemical effect, magnetic effect या फिर electrostatic effect. So the correct answer will be that is magnetic effect, which is option C. So let's forward with the next question. So yes, that this was the last question that we have completed here.
with the 50 MCQs of this, that is chapter which is for effects of electric current. So finally we have completed with all the 50 MCQs of this chapter. Next we will be taking with the 50 MCQs of the next chapter, that is chapter number 5, heat. So still if you are having any kind of the doubts regarding with this chapter, so you can ask in the live chat or else you can comment in this comment box of this video. Yes, so thank you everyone for joining. Uh, Thank you all. So we will be seeing in the further next 50 MCQs of this MCQ series, that is chapter 5 in the next part.